Seems to be working now. Chalo. Hello everyone. Am I clearly audible and is the screen shouldn't be visible as of now? I'll present that real quick. Am I clearly audible to everyone? Just give me a quick +1 in the chat if things are working fine. Let me quickly present the screen also. Audible, visible, chalo good. How is summers going, guys? कितने लोग गर्मी से तो पागल हो जाएंगे इंसान, I think. But anyways, I hope things are working fine on your end too. I still remember, like earlier, I used to be not habituated with things like AC and all, तो सब कुछ आराम से हो जाता था. Now, eco है काफी. नहीं भाई एसी नहीं है मेरे पास. अब मैं घर पे नहीं हूँ. आई मीन बैंगलोर में I didn't set up AC. Apparently, this time it's too hot in Bangalore in general compared to other. So I think Bangalore can no longer play this weather card anymore, right? Based on the temperatures that like is spiking till 40, I don't think the only advantage you used to have is no longer going to be there. Okay. iPad, MacBook only, or MacBook एक monitor. I think I have already showcased my like teaching setup, no? Like MacBook monitor, camera. That's it. और कुछ नहीं है. चलो जी. नहीं मेरे घर पे पानी आ रही है. Don't worry. Okay. चलो. So let's get started. Let's start with few things. Quick echo, bhai echo. Is the sound echoing? By any chance, let me check once here. I cannot check. Give me a quick +1 or -1. कुछ sound सही आ रहा है? Sound absolutely clearly आ रही है चीजों में. Let me close this as well. I think अब clear आना चाहिए. No echo. भाई जिसका आ रहा है वो वापस join करके एक बार देख लो यार. Echo तो नहीं आनी चाहिए. Proper mics use कर रहा हूँ मैं. I feel. Okay. So before we start, two quick announcement, right? This is one regarding YouTube, one regarding like camp. One is, I don't know if you guys like know about this or not, but Telegram पे जो like group है जिसपे मैं like YouTube के updates वगैरह डालता हूँ, उस पे I'm now starting to run a challenges, right? So every week I'll throw goodies for people to be motivated to upsolve and stuff. तो अगर तुम देखोगे, so there is this quest going on, ठीक है? जैसे upsolve करना है contest, proper explanation डालना है, right? This is just a small challenge just to promote upsolving, and I'll randomly pick new people every week who are completing it to get goodies, ठीक है? One on Twitter, one on LinkedIn, ठीक है? So this is one challenge I'm running. So quick announcement for that. Okay, so I hope you guys know. मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि like there is this Discord channel in case it's not Discord, Twitter channel, right? Twitter नहीं, Telegram. क्या बोल रहा हूँ मैं? Right? So I'll post that up. Next is like I hope you guys have started doing the days, right? तो days में जो हम लोग है day 6 पे essentially. So day 6 was pattern problems, and I think some of you have already solved it. But irrespective of that, I'll teach you something that you will find fairly interesting, and I'm pretty sure nobody would have taught you solving patterns the way I'm going to talk about in the next hour. Calendar problem including leap year. Nice. चलो good. कौन से रेटिंग के क्वेश्चंस करवा रहे हो? आई एम डूइंग लाइक जो लीड कोड डिस्कशन होता है उसके कोई रेटिंग नहीं. आज तो हम एक टेक्निक सीखने वाले. एवरीबडी हैज heard about patterns. सबने पैटर्न सुना है? एवरीबडी हैज heard about things called patterns. Yes or no? Quickly. सुना है ना पैटर्न्स? अरे हाँ या ना बोलो भाई. क्विकली. राइट? डीएसए कोर्स बहुत है यार. अब मैं नहीं कर पाऊंगा डीएसए कोर्स. पैटर्न प्रिंटिंग, यस. बट बिलीव मी व्हेन आई से इट, इट्स नॉट इजी. ठीक है?
Maybe like printing those simple patterns that you see in your college courses and college exams is easy. Actually, like doing harder pattern problems aren't that easy, right? Triangles, वो सब तो basic चीजें होती है, right? जो exam में आती है, right? There are certain things that are more sophisticated, and you need to learn more techniques that helps you solve it. So even though I'll talk about patterns today, believe me when I say this, you will actually be learning logic building, okay? Because patterns are very very crucial in logic building. कि यार कहाँ पर for loop लगाए, कहाँ if लगाए, कहाँ else लगाए, you will get that feel कि यार यहाँ पर हम ये क्यों कर रहे हैं, इसको कैसे change करें ताकि ये work कर जाए, right? So I personally believe that patterns are a very good way of learning the logic part of things, right? Plus there are tons of cool techniques that I am pretty sure nobody taught you, which would make you feel like कि ठीक है यार कुछ तो magic सीखा है, ठीक है? तो आज if you haven't seen my pattern session before, most probably what you will see is to some degree magic, right? है ना? I have already equations of curves, maybe देखते हैं, ठीक है? I will teach you rotating donut. Not really, but ठीक है, something on that zone, ठीक है? Okay, let's get started. Let's start with this. So for today, we'll be on YT chat itself, right? Like post your doubts and stuff. I don't think there'll be many of doubts. We'll just focus on the class, ठीक है? बाकी questions बाद में. We'll have really good ideas to be learned today. I'll go level by level. So zero से start करेंगे. We'll go till a certain level जहाँ पर तुम कुछ भी pattern बना पाओगे, right? Okay, let's get started. So we are talking about patterns. So I'll start with level 1. Let's see कितने लोग ये question कर पाओगे. Okay, the pattern is you have to give, you will be given n equal to 5. तुम्हें 5 क्रॉस 5 का एक ऐसे क्रॉस वाला पैटर्न प्रिंट करना है. This is something that you have to take care of. 5 क्रॉस 5 वाला एक पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें सब क्रॉस है. How many of you can do this? Quick +1 in the chat if you can do it. फटाफट. हाँ यार easy है. We start with easy, but believe me when I say this, जब end तक पहुंचेगा तब बोलोगे विवेक क्या मस्त चीज सीख लिया, अब तो मजा आ रहा है करने में. चीजें हार्ड नहीं होती है, easy होती है, but level by level करना पड़ता है, right? Okay. +1. Okay, तो ये तो हो जाएगा. I mean all of you guys know loops and stuff, so ये तो हो ही जाएगा लग रहा है अभी. ठीक है, ठीक है. I know that you guys can do it, but this actually tells us something super interesting. ठीक है, एक ध्यान से एक word सुना which I will call as canvas. Canvas मतलब क्या होता है? A place where you can paint something, right? Can I say that this is a 5 cross 5 canvas जिसमें सब कुछ क्रॉस भरा हुआ है? It's a 5 cross 5 canvas जिसमें सब कुछ क्रॉस भरा हुआ है. It's sort of like this matrix, है ना, जिसमें हमने सब जगह क्रॉस भर रखा है. Can I say this is true? हाँ आएंगे आएंगे, सब पे आएंगे, डोंट वरी. अरे 5 तो इनपुट आएगा ना, दिस इज n इज एन इनपुट, बट n क्रॉस n का एक कैनवस है एंड एवरीथिंग इज फिल्ड. वी कैन से दिस, राइट? सो in general when you're dealing with patterns, you first have to detect कि मेरा canvas size क्या है. What is my canvas size, right? First thing that you have to detect in any pattern problem is what is my canvas size. In this case, it's n cross n, or at every place I have to fill in a cross. So what I'll do is I'll just quickly open an online editor and I'll show you. I'll just directly code it because इसमें कुछ explain करने का है नहीं. In code only I'll explain it. It's super simple, but again super important. कि ये जो कैनवस वाली चीज मैं बोल रहा हूं ना, दिस अभी तो इजी लग रही है बट थोड़ी देर बाद नहीं लगेगी. Okay, I'll just quickly share the coding screen also. In fact, let's do one thing. Let's shift it to another window so that I can do this. है ना? Okay. So we are given a n cross n, so integer n, scene n. So हमें क्या करना पड़ता है when you are printing patterns? Very very simple. For loops लगाएंगे. We will have first for loop will tell us the number of rows, ठीक है, and the second for loop will be responsible of printing that row, ठीक है. So it will go through the columns and print that all the columns of that row and then go to the next row.
So the way we write it is, for integer I equal to 0, I is less than n, I plus plus, because there are n rows, 0th number row, 1 number row, 2 number row, 3 number row, 4 number row. And then for integer j equal to 0, j is less than n, j plus plus. So what we are doing is, for that row, for the ith row, I'm going through j's in that, and then I'm printing cout cross. After the whole row is printed, I have to print cout slash n, and most probably if I just do this much, I will be taking input. So 5, it should print the 5 cross 5 ka jo bhi humne discuss kara. Is this clear? Use Sublime. I don't use it in my classes because I feel sometimes people find it hard to set up, and everybody has different setups. So online setup, anybody can replicate. That's why I take this. Okay. Yes, I'll keep it in English only. Yeah. Okay, so this is how we will keep the pattern. So you have n rows, n columns. In each row, you go through that and print all the columns, and then move to the next line. This clear to everyone? I don't think I need to explain much in this, but still I just want to get quick plus ones from everyone. I need everyone to be on all the levels we go through today. Okay? And there will be many levels. Let's see how many levels we can cross today. There is no end to levels, believe me when I say this, but let's see how much we can do in 2 hours. Okay? Chalo. Let's see how many levels we can cross. This is a game now. Okay, level 1. So this is now checkpoint. I'll assume that you guys understand this. This is checkpoint 1. Next time I'll assume that you know level 1. Next we'll move to level 2. Okay. So level 2 is print this. Cross, 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 cross. If n is equal to 5, you have to print this part. I mean, there is spaces in front. Okay. But it's not being shown right now. I mean, you don't have to show these dashes, but there is spaces over here. Okay. Understand that this is space. How many of you can do this? Quick +2 if you can cross level 2 yourself without even me teaching anything. I need a +2 in chat, +1 nahi, +2. If you can print this. So I know that many of you would have done it something like this. Ki, depending on the column I, print some number of spaces and then some cross and stuff. I mean, I know many of you do this. Ki count the number of spaces, try to decide some formula for it, and then print the spaces, then print the cross, then print this, right? How many of you do this way? Put a me if you do this way. Ki spaces count karta hu, and then I just do, then I print this cross, something like this. This is how I have seen mostly it's being taught, right? That I count the number of things in every row and stuff. We will not do it that way, okay? This is where things start changing. We will use something called as equations of lines. Everybody knows this, y equal to mx plus c. कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है आज तक? Has everybody read this? कुछ तो भी ऐसा होता है, y equal to mx plus c. Equations of lines. Right? We will try to use something similar to this, okay? We will say, forget about all these things. I can see my canvas. What is the size of my canvas? 5 cross 5. What am I painting? Am I painting things only on the diagonal? Yes. Right? What is the equation of my diagonal? So if I think about this, okay, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, cross, 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 okay? So this is, let's suppose, your I, this is, let's suppose, your J. We want to figure out the equation of this particular line over here. Yeah. In terms of y and x, you can find out, but I feel let's keep it in terms of I and j, and I being this side and j being this side, because yeah, I know that you guys can find like actual equations in terms of like xy axis, but we need to find it in terms of I and j's because we are plotting that way, right? So this is the i's, this is the j's. So the equation will be, you can see that whenever I is equal to j, this is getting printed. See, I equal to 0, j equal to 0, I equal to 1, j equal to 1, I equal to 2, j equal to 2, right? So this is I equal to j.
So if I go back over here to my code and just make this, if I is equal to j, then I print this, or else I print this. I mean, when you print a single line after if you don't need to put a bracket, but anyways, we will do it. That's difficult. We'll see. Let's run this. Okay. Semicolon. N equal to 5. Did we get what we wanted? Is this code making sense to everyone? Okay, I just added one line over here. Okay. ठीक है, अभी start हुआ है, अभी कुछ हुआ भी नहीं है. Like we haven't even started magic yet. ठीक है, but simple enough that we are figuring out the equation of the line and putting it that way. Okay. Great. Nice. Next. What if I had to plot this? What if I had to plot this? Pardon the like scale of the drawings, but this way. I mean, if I had to put a blue label what do you mean? What is this? Tell me the equation of this line. Okay. Now you will ask me, Vivek, ये तो थोड़ा difficult लग रहा है. How do I figure out the equations of lines? Because it seems कुछ तो होगा, but I'm finding it difficult. Okay, I'll give you a rule which will make it super easy. Line ऐसा, so the equation will be I equal to j plus c. Line ऐसा, so it will be I plus j equal to c. Line ऐसा, so it will be j equal to c. Line ऐसा, so it will be I equal to c. How does this line looks like? Which one? 1, 2, 3, 4. कौन सा वाला लग रहा है? कौन सा लाइन दिख रहा है? Which line, which variation of the line does this look like? Obviously number 2, right? So its format will be I plus j equal to c. How will you find out c? Simply put one value. So at 0, you see that this is at 4. Okay. So this will be nothing but 4. In general, if it was n, this is 0, 1, 2, 3 up till n minus 1. This is 0 and so on. So this one is at 0, n minus 1. Put it over here, you will get that c is equal to nothing but n minus 1. So can I say the equation is this? Put one value and you will see. So it's 0 index, so it is not n, it's not I plus j equal to n, it's I plus j equal to n minus 1. Put one value and you will get the value of constant. Clear everyone? कुछ नहीं किया हमने. Like we figured out the value, one position जहां I का value पता है, j का value पता है. We figured it out, we put it in the equation and we got the value of c. Everybody clear on how did we get it? We'll do more practice, don't worry, but like, is this making sense? ठीक है? So whichever type it is, just see that and put it over there. अपने को मिल जाएगा क्या है, ठीक है? Great. So this is something that you put and you get the equation of the line. Once you have the equation of line, what do we do? Simply code it in the code. कुछ नहीं करना है, इधर जाना है and run and put input 5. आ रहा है output. Coming to that, we'll solve harder problems than what is available in the camp also, don't worry. When I am teaching, I'll take you to a level jahan par it's very difficult to reach. Okay. So you figure out the equation of the line. Okay, where do I need to put the crosses? Okay. Yeah. And I have already told you that this type of line has this equation, this type of line has this. So you see it's like this. So you put it in this.
put one point inside this ki I ka value 0 dala, j ka value 4 dala, so you get the value of constant as 4 in case of n minus 1, right? And this will be over here. Okay. No. So when you are doing pattern problems, we cannot build 2D arrays. I'm not building 2D array if you see it. I am printing it character by character only, like first row, then second row, then third row. Okay. When you have matrices, you can traverse this way also. But that is not allowed in pattern problems in general. That is the agenda of pattern problems. That can you do it without building a matrix? Because with matrix, I can do tons of things. But it's easy right now, and then that is why you are trying to tell me something around those कि विवेक एक मैट्रिक्स बना के ऐसे करके चला देते हैं पॉइंटर को. Why are we doing it in n square? Why we are not doing it in n? As we go through more problem, you will understand कि what is the importance of all this. Okay. 1 से n, हाँ 1 से n करा तो n होगा. Yeah, 1 से n करा तो n plus 1 होगा actually. Yes, but I always use zero equations. Okay, so let's do one more problem. Let's do one more problem. You will get full clarity. Okay. Let's see if you guys can figure this out. This is super simple. ये print करना रहा तो how will you do this? अरे अभी तो हमने picture start करी है. Why are you getting so like hasty about solving hard problems? I'll go to problems which you can never solve at this level, wherever you are right now, and after the class you will be able to. I don't leave classes without that. Okay? No matter where you are at which level, we'll get there. Merge both conditions. Yes, right? If you are on this line or you are on this line, then you should print a cross or not. So it's not an and will be just intersection. You have to take or, either this line or this line. So we will just go back over here and write or I equal to j, the earlier condition of the other line. So this is one line's equation, this is other line's equation. If I put 5 over here, you'll see this. Clear? So this line equation, if it's on this line or on this line, then print a cross or else print space. Clear till this point? Quick +1 in the chat, real quick. Okay, now this one you had to count too many spaces and stuff, and फिर ये difficult हो जाता थोड़ा if you had done it the other way, which you generally learn, right? Okay, we'll build everything. कुछ भी जो मन में आएगा बना देंगे. अभी रुको तो, we have just started. Okay, चलो, this is the first thing. Next, let's move to level 3 next. Okay, so what we have learned in level 2, if you think about what we learned in level 2, building lines. That is fine. I also had exams next day and I was giving contests with my team to practice for ICPC. I mean, you should have priorities in your life, but I would not suggest it to everyone. Okay, I study before exams. Level 2, lines. Aate, we'll come to that, don't worry. Okay, next. For ICPC, yes. I mean, it was not really actually for ICPC. There was this famous contest called Bubble Cup, which was happening on CF, and we decided कि like we should give. तो कल एग्जाम था, but फिर भी हम लोग दे रहे थे लैब में बैठ के. भाड़ में जाए एग्जाम, देखा जाएगा. Okay, so next, let's move to level 3. You should have priorities in your life here. क्या करना है? I don't think like I'll go for masters most probably. I don't want to be in US in general. I don't have that as a life goal. Okay.
Let's talk about parabola and all. Nobody will ask you, okay? The questions that you will get more than parabolas and all is, can you guess, shaded regions. ये सब बनाओ, कुछ ये बनाओ, ऐसे कुछ आता है एग्जाम्स में, राइट? है ना, कुछ ऐसा टाइप का. So next we'll talk about shaded regions. Okay. So how do you build shaded regions, right? So let's take a canvas and let's try to build a shaded region. I want you to shade this region. मतलब ये जो line है, the same thing that we had built earlier, उसके इस तरफ पे सब shade करने हैं हमें. This is the shaded triangle. So it should look something like this. This is the pattern to be printed for n equal to 5. How do you do this? Sorry for this not looking perfect. I should rotate it a little bit. समझ जाओ, भावना को समझ जाओ. This is थोड़ा सा. I mean, if I remove this border, it will look better. Okay. How do you shade regions? Let's see. Let's see, you guys can figure this out. So you know this line, right? ये तो पता है अपने को. We had figured this line before. This line was nothing but I plus j equal to n minus 1. है ना? So one side of this line needs to be shaded. How do you do this? How do you do this? So when we were coding it, right, we were saying that anything that lies on this line should get a cross. Now, if I just try to think about any point over here, right? So think about this. This is the line, okay? This lies on this equation. If you see this point, for that I plus j will be equal to this, greater than n minus 1 or less than n minus 1? Tell me quickly. If you see one other point, just one below the line that you are thinking about, is it greater than n minus 1, less than n minus 1, or equal to n minus 1? Why? Because this is, if this plus this is n minus 1, then you just increase your I. So this sum will obviously increase. So it should be greater than n minus 1, right? So since you're going down, the I is increasing and you're still on this side, it should be greater than n minus 1. In fact, everything over here will have greater than n minus 1 I plus j. So the equation in that case becomes, like, remember this, if you run this piece of code, you get, I'll just quickly like hard code 5 for now, like text mode 5, okay? So if you run this, you are getting this cross on this side. If I make this greater than equal to, what do you think you will get? A very, very beautiful shaded region. Because this line was I plus j equal to n minus 1 and everything below is greater than equal to n minus 1, but we are only printing the canvas, so you will get this beautiful pattern. Okay? So it's just one. So if you understand, going from lines to shaded regions now becomes like changing this equal to this greater than wala thing. Okay? Okay. So somebody is asking, are questions like this asked in Sheepy though or interviews? Some interviews, yes. But here, please don't learn things for doing contests and for interviews. That's, you will reach a certain level anyways. Okay?
if you don't learn techniques that you just love कि यार ये कितना अच्छा चीज सीख लिया, I mean if you don't appreciate techniques the way you are when you are learning them, I don't think you will go far in any field in general. Like appreciation for things that you learn is what keeps you motivated for anything going forward, मतलब for a long duration, and that's when you get really good. ठीक है, ठीक है, so भूल जाओ. ठीक है, नेक्स्ट. विवेक, कुछ तो शेडेड रीजन आ रहा है, पूरा पूरा समझ में नहीं आया विवेक. ओके, थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो रहा है. चलो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर. ओके, टेल मी हाउ विल यू बिल्ड दिस शेडेड रीजन quickly. This should be super simple now. Given one example, मतलब वही है, you have to build this standard triangle. Let's see, how do you figure it out? It's not about knowing the answer. Vivek, मैं खुद से पता कैसे करूंगा? That is something that is important, right? How do I figure it out myself? What is the line of this equation? You will see, you will think about कि अच्छा, it looks like this, so it will be I plus j equal to c. Since it's passing from 0,0 in the canvas pattern, like this is 0, 0, right? So it will be I equal to j. Now I know that greater than or less than will make it shade one of the two regions. Okay, so how do I change it? Okay, you will see, go down one equation, one point. Okay, this is I equal to j. If you go one line, if you increase your I, it still should satisfy. So I should be greater than equal to j. If you increase your I, it should satisfy. So equal वाले तो करेंगे. If I is even bigger than that equal वाला thing, still it should satisfy. So it should be this. Just move one step below the line and you will figure out कि क्या करना पड़ेगा. Like which symbol should be put over here. So if I just put I is greater than equal to j and put this, and we have whatever we needed. Less than equal to नहीं, greater than equal to. How did I figure it out? भाई एक पॉइंट देखो, this is equal. नीचे गए तो satisfy करेगा. नीचे में I बढ़ रहा है, yes बढ़ रहा है. So I equal to j से I बढ़ेगा तो भी satisfy करेगा. So I should be greater than equal to j. That is how you figure it out. Okay. Let's do one more question. ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग. यहां तक सब कोई क्लियर? थोड़ा बहुत, मतलब 70% क्लियर. लाइक एज वी प्रैक्टिस मोर, अभी तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आना है. +1 in the chat quickly if things are clear up till this. I need +1 from everyone. Spam कर दो पूरा chat, no problem. But I need +1 from everyone. Okay. Little bit unclear for some of you. It's unclear. Don't worry. I'll take more examples next. It will make it clear. I'll make it clear. Okay. Good. Okay. So this is a good point. Next we'll move to level 3. तब तक जितने लोग stream पे हो यार, quickly एक like कर दो. That will just help this stream to be pushed to more people. But one of my students once told me कि विवेक, I'm like, मैं किसी को बताऊंगा नहीं इसके बारे में. I don't want people to know about the techniques you are teaching. So that was actually very funny, but I understand where we are headed towards. One of my students once told me कि विवेक, मैं तो किसी को बताता ही नहीं हूँ कि मैं आपके पास पढ़ रहा हूँ, because I don't want others to know. Placement हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा. So don't do that. ठीक है, it just helps to grow as a creator. But yes, और लोग जान पाएंगे तो it just helps more people. हाँ, most of my students tell me this कि बताने का नहीं, मत बता. मैं नहीं बताऊंगा अभी, बाद में जब हो जाएगा जब तब बताऊंगा. Okay, next move to level 4. ठीक है, सब सांप भरे हैं कॉलेजेस में, सब सांप स्टूडेंट है भाई, कोई बताता नहीं है. It is true है. Level 4. Okay, Vivek, shaded regions are good, but can I build any shaded region? जैसे मैंने भी बोला था थोड़ी देर पहले. Let's try to build this. If n is equal to 4, print this pattern.
Okay. कोई बोल रहा है बंदी को छोड़ के किसी को नहीं बताना, वो भी छोड़ के चली गई तो बाद में रिग्रेट करोगे, क्या पता इसको भी क्यों बताया, क्या पता वो किसी और को बता रही हो। ये सब डिस्कस नहीं करते, बट ठीक है। Okay, n equal to 4, this is the pattern that we have to print. What should we think first? क्या सोचना है इसमें? नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है मेरा इस चीज में, ठीक है। ऐसे ऐसे सांप लोग नहीं ढूंढता मैं। ओके, कैनवस साइज परफेक्ट। फर्स्ट थिंग इज कैनवस, इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड आता है, पहले कैनवस। इज दिस कैनवस n क्रॉस n एनी मोर? बताओ, इज दिस कैनवस n क्रॉस n एनी मोर? आई विल सी क्विकली। नो, कितना है? लेट्स सी। So इधर तो 4 है, this side is 4, but this side is not 4. This dimension is 7, which is essentially nothing but 2 times n minus 1. Like 4 इधर है, इधर भी 4 है, but this gets repeated. So 2n minus 1. So it is n, इस side पे n है, like this is equal to n, this is equal to 2n minus 1. Clear? Okay. Next, how do we print this? यहां पर कितने लाइन्स है? क्या यहां पर एक सिंगल लाइन है? नॉट रियली, आई कैन सी 2 लाइन्स, इजंट इट? यस और नो? 2 लाइन है, 2 लाइन है। So there are 2 lines, so we need to find equations of both the lines. Tell me the equation of this line real quick, क्योंकि ये एक लाइन तो हमने 5 अभी तक 2-3 बार लिख लिया। Tell me the equation of this line real quick. It looks like this, so it should be equal to, it should be I plus j equal to constant. एक point put कर दो, this is 0. What will be this point? This is nothing but n minus 1. This is nothing but 2n minus 2. Why? अगर length n है तो लास्ट पॉइंट n minus 1 है। So अगर लेंथ 2n minus 1 है, लास्ट पॉइंट 2n minus 2 है। क्लियर? So this is nothing but I plus j equal to n minus 1. ये n minus 1 क्यों n बोल रहे हो तुम लोग अभी तक? हाँ, n minus 1 लिखा है सबने, चलो ठीक है, गुड। ओके, ये तो सेम इक्वेशन है। What is the equation of this line? Now this time you guys tell me. Let's see how many of you can quickly tell me this correctly. And remember, it looks like this, so it should be this I equal to j plus constant. So I equal to j plus constant. Find out the constant quickly. It's not I equal to j. I'll wait on the chat. Let's see who figures out first. मुझे भी आंसर पता नहीं है। हाँ, I think I've already gotten correct answers on the chat. चलो पुट करते हैं। एक पॉइंट पता है इस लाइन पे, यू नो वन पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन, दिस वन, 0,n-1 पुट कर दो। 0 इक्वल टू n-1 प्लस c का वैल्यू क्या आया? -n-1, राइट? पुट इट बैक, I equal to j minus n, if you open the bracket, plus 1.
Clear, everyone? How did we figure out the equation of the line? Equation of the line clear to everyone? I don't think I'll repeat this now. They're here forth, but now I think you guys should be able to figure out equations of lines now. ठीक है, अब level 4 पहुंच गए तो this is level 2 वाला thing. It should start getting easier as we go on, right? Okay. So this line we have figured out. Okay, two equations. So let's quickly code them up and try to see what is happening. इधर अपना 2n minus 1 है canvas size, less than तक जा रहे हैं, so we're going till 2n minus 2. If it is equal, I plus j is equal to n minus 1, or I equal to j minus n plus 1, let's print across. Let's see क्या होता है. कुछ तो भी आ रहा है. Are we getting the two lines? क्या relevant चीजें पूछो. Yes. Logical and elegant ways are the things that you should learn. Every topic has things like this. So this is what I call as frameworks. Okay? Every topic in DSA, in just simple patterns, also you have frameworks that you don't think about things randomly. कि यार अच्छा DP है या DP है, क्या सोचेंगे? भाई क्या random सोचोगे? No, you should always have a track कि मैं क्या सोचूंगा. You should have a framework with you कि मैं क्या सोचूंगा इसके बारे में. That is how you basically solve any problem in general. Okay. So this is YouTube पे मैंने डाल ही रखा है DP forms, एक बार try करना. You will, but it's not super basic, but once you understand it, you realize कि it makes your thinking very, very clear. And clarity of thinking is one thing that really differentiates you. It's not about number of problems. Okay, next. This is something that we have built till now, but we have to shade regions. हमें तो lines नहीं चाहिए थे. We just wanted to shade regions. Okay. तो region कैसे shade करेंगे? Let's see. हमें जानना है इस line के नीचे. What should we make this? Greater than equal or less than equal? कौन सा? नीचे जाना है. I plus j will increase. So I plus j, like a higher I should satisfy. So it should be greater than equal. Okay. Good. Okay. This one, you have I equal to j minus n. If you go down below, it should satisfy. So if I increases, it should satisfy. So I can be greater than equal to this. Okay. So if I go ahead and make this greater than equal and greater than equal, if there is any line na, if you go down, मतलब उस line से नीचे जाओगे, and you have to shade that part, I वाले side पे हमेशा greater than equal कर देना. ठीक है? That's it. That's the simple rule. Whenever you have line, if you have to go below it, मतलब ऐसे नीचे shade करना है, so I increase कर रहा है, so whichever side has I, उस side पे greater than equal कर देना. It will work. Okay? So this is essentially how you think about cross and stuff. And let's print it. Let's see क्या होता है. हाँ, yes. विवेक ये क्या आ गया? This is something I didn't expect. क्योंकि हमने क्या करा? हमने बोला ये कैनवस था, ये दोनों लाइंस थे. हमने बोला इसके नीचे, तो ये पूरा रीजन होता है इसके नीचे. फिर हमने बोला इस लाइन के नीचे, ये ब्लू लाइन के नीचे, सो इसका पूरा रीजन होता है इसमें. हमने बोला और कर दो, सो और करने से तो पूरा आ जाएगा. तो हमें करना क्या है? एंड. हम करेंगे सिंपल एंड. ठीक है. सी आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग. ये सब कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है.
इट्स जस्ट कैनवस डिटेक्शन, ये डिटेक्ट, लाइंस डिटेक्ट एंड दिस डिटेक्ट, इक्वल डिटेक्शन चेंज, अपने आप सब बनते जा रहे हैं. आई एम नॉट इवन चेंजिंग एनीथिंग. ठीक है, फील आ रहा है कुछ कुछ की कुछ तो हो रहा है, मतलब अभी भी इनफैक्ट मैजिक हैज नॉट इवन स्टार्टेड. ठीक है, अभी तो हम फंडामेंटल सीख रहे हैं मैजिक के लिए. ओके, चलो मैजिक सीखना स्टार्ट करें. शुड वी ट्राई एंड लर्न मोर मैजिक्स? आफ्टर एवरी, so maybe make this, is that what you're asking? I mean, I skewed it this side. Okay, then you'll have to figure out some different lines equations. I'll explain that next. ठीक है, पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो, but okay, let's understand more of magics अभी. Okay, Vivek, and part was this. We didn't want this full thing. We wanted the intersection of the two shaded regions. Okay. Okay. Next, level 5. Now this is where कुछ तो भी मैजिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, you are given n equal to 9, n equal to 6. What do you need to print? ये समझ में आया? But what is this? है ना, सॉर्ट ऑफ कुछ भी बोल लो, डीएनए बोल लो या जो बोलना है बोल, पता नहीं क्या है ये. मैंने बस रैंडम कुछ बना दिया है बट मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बनाया है, बट एनीवेज जो भी अपन बना लेंगे, है ना. ऐसे ही कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ भी वो बना लेंगे, है ना. दिस इज व्हाट वी नीड टू बिल्ड. मतलब these numbers, ये नंबर लिखना नहीं है, you don't need to write these numbers, okay, but it's just to show you that you have to print 6 of these ribbon sequences, let's say. Okay, अच्छा, okay, seen this क्या? Okay, हाँ, मतलब मैं ही सिखाया हूँ अगर मैंने सिखा रखा है तो. फैमिली ऑफ लाइंस. विवेक ये कैसे प्रिंट होगा, राइट? यार लेट्स फर्स्ट स्टडी ये सब ये सब क्वेश्चंस तो हजारों बार हजारों लोगों को पूछा जा चुका है. इसके क्वेश्चंस तो नेट पे मिल जाएंगे आंसर्स. हाउ टू स्टडी डीएसए, बेस्ट बुक फॉर डीएसए, ये सारे मेरे यूट्यूब पे भी वीडियो बने है. ठीक है, पढ़ाई कर लो थोड़ा. सीख लो डीएसए भाई, है ना. सो यू हैव दिस पैटर्न टू बी बिल्ट एंड यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू बिल्ड दिस. सीम्स रेट कितना कितना हार्ड लग रहा है? आउट ऑफ 0 to 5 डिफिकल्टी रेटिंग देना है इसको. क्विकली ऑन द चैट, लेट्स सी. गिव मी अ डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन द चैट. बहुत हार्ड, नाइस. 3.6, नाइस.
ठीक है 10 ओके गुड ठीक है लेट्स स्टार्ट विद आवर यूजुअल थिंग ठीक है ध्यान से सुनना जो सिखा रहा हूं अगर ये समझ गए मजा ही आ जाएगा तुम लोग को इसका कैनवस साइज क्या होने वाला है कोई मुझे इसका फॉर्मूला बताएगा एन के साइज पे डिपेंडेंट ट्राई दिस फर्स्ट इधर तो 5 है 5 क्रॉस इधर क्या होगा बताओ थिंक अबाउट लाइक जैसे अगर अगर 1 होता तो इट वुड हैव बीन टिल दिस मच राइट सो इट वुड हैव बीन जैसे इफ आई थिंक अबाउट इट दिस इज द पार्ट दैट इज गेटिंग रिपीटेड मतलब सॉर्ट ऑफ तो सोचो कितना होगा मतलब ये एक बार अटैच कर दिया इस पे सो दिस इज देयर इस पे ये एक बार अटैच किया तो यू गेट 1 इस पे ये अटैच किया तो यू गेट अगेन 2 इस पे ये अटैच किया फिर से लाइक ये जो 4 लेंथ है तो you get 3 so 6 times attach kiya and then 2 more so there is 3 plus n into 4 plus 2 so can I say it's 4n plus 5 क्योंकि देखो ये जो साइड है वो तो 5 है सो दिस लेंथ इज आल्सो 5 टू पूरे के लिए बट दिस वन पॉइंट इज शेयर्ड सो हम 4 लेंथ पे देखेंगे कि यार ये 4 जैसे ये जो क्रॉस है इस पे 4 ऐड कर दिया पीछे सो यू गेट 4 लाइक वन पैटर्न देन इस पे फिर से 4 ऐड किया तो यू विल गेट अनदर वन यू नीड टू गेट 6 सो 4 लेंथ इनटू जितने बार चाहिए plus this if you put n equal to 6 are we getting the correct answer 6 into 4 6 for the 24 plus 5 29 let's try for 1 अगर मुझे एक ही चाहिए n equal to 1 1 into 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 के लिए करेक्ट आ रहा है which means this formula is correct ये थोड़ा मैथ्स काउंटिंग वाला पार्ट हो गया that you see the diagram you figure out the length of it okay ये तुम्हें वैसे भी करना पड़ेगा any problem so it is 4n plus 5 understood n square minus 1 कहां से आ रहा है where are you getting n square so the length is not n this is not n this is 5 this is fixed 5 the number of this internal things is what is dependent okay should be fine now give me a quick +1 if I'm clearly audible now it should be working fine no ठीक आ रहा है अभी perfect चलो so first 3 here every time you add this there is a 4 length every time you add this there is a 4 length तो n बार चाहिए तो n into 4 फिर लास्ट में 2 ऐसे 2 length this is how I'm calculating this formula ठीक है but this is not interesting part ये तुम लोड मत लो ये तुम लोग figure out कर लोगे खुद से this is not the like this is hard but not super hard ठीक है क्या चीज -1 किस चीज पे ऑडियो आ रही है अभी भी yes or no should be working where n is equal to n minus 1 or n depending on parity you can say okay so this is the length okay
सो 4 इंटू एन प्लस 5. क्या ये मेरा कैनवस साइज है? चलो अभी के लिए अज्यूम करते हैं. दिस इज द थिंग. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन वंस मोर एट द लास्ट. बट अज्यूम करते हैं कि दिस इज द कैनवस साइज. इज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर टू एवरीवन? कि ऐसा हमारा कैनवस साइज सेट करेंगे. लाइक एग्जैक्टली मे बी यू माइट नॉट हैव फिगर्ड आउट दिस इक्वेशन येट, बट अगर है तो ये कैनवस साइज होगा. अच्छा अच्छा, तुम लोग बताओ, कैन यू प्रिंट द फर्स्ट 5 लेंथ? यस और नो? पहला 5 लेंथ प्रिंट कर लोगे? बस इतना सा. कैन यू गाइस प्रिंट दिस मच? यस और नो? कैसे प्रिंट करा था? फर्स्ट 5 प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है, चलो अब फाइनल मैजिक. I'll just go over here and simply add mod 4 and run this piece of code. क्या कुछ सिमिलर सिमिलर सा दिख रहा है? कि यहाँ पर 5 वाले बन गए. इनपुट हमारा 5 नहीं 6 है, 6 कर लेते हैं. ओ सॉरी, 5 हमने यहाँ पर इसका डायमेंशन फिक्स्ड 5 है. सो 5 क्रॉस n इज इक्वल टू, कुछ हमने गलत लिख दिया है. जस्ट अ सेक. क्या किया हमने इसमें? n के वैल्यू पे डिपेंडेंट ही क्यों है? n तो 6 है, तो दिस इज j I. ओके, अच्छा ये 5 होना चाहिए. राइट. ठीक है. विवेक क्या हुआ? ये क्या लिखा आपने? ये क्या कर दिया? व्हाट इज दिस mod 4 विवेक दैट यू आर एडिंग टू द कोड व्हिच इज certainly making it change? है ना? n is the number of like this ना, the 1 2 3 4 5 6. कैसे हो रहा है विवेक ये? विवेक काम कैसे कर रहा है ये बताओ. जादू तो दिख रहा है, काम कैसे कर रहा है ये? ठीक है, चलो वो समझते हैं थोड़ा सा. रूल बड़ा सिंपल है. ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑन. ठीक है. कैन आई बिल्ड दिस होल थिंग by forgetting about the rest and just taking this and copy pasting it multiple times? Yes or no? Yes or no? तो मैंने करा यही है. मैंने पैटर्न को इधर से लिया, उसको 4 लेंथ का लिया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया. ठीक है. सो व्हेनेवर तुम्हें कॉलम्स, 4 कॉलम, फर्स्ट 4 कॉलम को उठाए कॉपी पेस्ट करना है बार बार, यू जस्ट ऐड j में mod 4. है ना? वाई इज इट वर्किंग विवेक? ये तो ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, बट काम क्यों कर रहा है ये? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा. विवेक एक्सप्लेन मी व्हाई इज दिस इवन वर्किंग. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. j equal to 0, j equal to 4, j equal to 8, j equal to 12, right? So 1 2 3 4 5 6 7 and so on. ठीक है, this is the pattern. Okay, now in this case
फॉर दिस सेकेंड ब्लॉक, ठीक है, कोई भी मैं सेल लूं i कॉमा जे, दिस सेल i कॉमा जे, this or this cell I comma j, is it a space or a cross? Is the logic with respect to this block is same as इधर वो चीज जो है, क्या वो सेम चीज यहां पर होगा? yes or no? Whatever block I take in this partition where like the j has exceeded 4 and we are in some other like divide by 4 का remainder में divide multiple में, whether a certain cell I comma j will be space or a cross, the logic to determine that is simply as saying this कि अगर वही same corresponding चीज first block में space है या cross है, if it's a space or a cross, then we should do the same thing, right? So essentially हो क्या रहा है, जब I J का हम जो equation लिख रहे हैं ना, so what is happening is it's just translating this block on top of this और फिर decide कर रहा है इसके equation से, so it's trying to use its equations over here and उससे determine कर रहा है that whether it should be a cross or not, and depending on whether it's a cross or not, place it at that I comma j, not I j mod 4. तो हम place I comma j पे कर रहे हैं, I comma j पे कर रहे हैं, but decide कैसे कर रहे हैं? By translating the j to the first block. तो अगर कोई I comma j यहां सामने है तो उसको हम पहले फर्स्ट ब्लॉक में ले आ रहे हैं एंड बोल रहे फर्स्ट ब्लॉक में जो इक्वेशन है उससे डिसाइड करो कि whether it's a cross or a dot, cross or a space, and based on that then print the space and cross at that place only. Okay, so this is essentially like saying j को ट्रांसलेट करके फर्स्ट ब्लॉक में ले आओ, try to decide in the first block कि वो space है या cross, and then decide at that place. No, n is 6, so and the length of repeating part is 4. सही प्रिंट हो रहा है तो मेरे ख्याल से इक्वेशन सही है, ठीक है. It should, I don't think it should be 6n plus 5. अरे मैं बोला तो सही होने का ना, मैं कभी गलत बोलता हूँ क्या? ठीक है. If we can't copy paste the first if else statement, I mean it will you will have to paste it for every line, all these lines you will have to copy paste. I just built that pattern magically by just repeating it. देखो ध्यान से सोचो, अब हो क्या रहा है कोड में, कोड जा रहा है वो like the code is iterating through every cell, so it's coming over here, ठीक है. It's saying भाई j का वैल्यू है 14, okay, I का वैल्यू है 1, तुम बताओ should this be a space or not, okay. तो हम क्या कर रहे हैं, j को mod 4 ले ले, 14 mod 4, remainder is how much, 2. so it's same as saying कि क्या 1,2 स्पेस है, अगर वो स्पेस है तो ये भी स्पेस होगा. अगर if I is equal to 2 होता, so if we were deciding this, the remainder is 2, so 2,2 अगर क्रॉस है तो ये भी क्रॉस होगा. That's what is happening inside behind the scenes. समझ में आया आप कैसे हो रहा है ये चीज? Why is this mod working? मैजिक हो रहा है कुछ कुछ. अभी और मैजिक दिखाता हूं, अभी तो स्टार्ट किया है दिखाना, ठीक है. res of I comma j is res of, we can do that but we don't have a matrix, right, जिसमें saved a value. If that was there then we could have used it acoustic, right, but then we don't have it saved, so we have to use a logic, ठीक है. whatever was deciding कि ये क्रॉस है या डॉट, क्रॉस है या स्पेस, same logic being used over here, ठीक है. and this is where magic starts. In fact, just as a teaser of what we will do, we'll get a short break. Just as a teaser, if I make this 10, what will happen? What do you think? Nothing changes. Maybe even if it becomes, let's say, 20,
कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट दैट पार्ट ओनली. ओके. But what if I make this ji mod 4 and I mod 4? What happens then? I think capital X is a big letter. Small x लेके करते हैं. कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब? अभी आएंगे. आई विल रिपीट दिस मॉड्यूलो वाला टेक्निक टू कॉपी पेस्ट, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो. उसे मैं तुम्हें और एक्सपर्ट बना दूंगा, राइट? यू विल बी एबल टू कॉपी पेस्ट मोर. ओके. कॉलेज कौन सा एडमिट भाई मुझे नहीं पता भाई, मुझे मत पूछो कॉलेज किस में एडमिट लेना चाहिए. आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड. ठीक है. ठीक है. सो आई में करा तो वाई इस पे रेप्लिकेट हो गया, जे पे मॉड्यूलो लिया तो इधर रेप्लिकेट हो गया. इनफैक्ट आई पे तुम अगर मॉड 3 लेते तो क्या होता? फर्स्ट 3 लाइंस इधर नहीं किया ना, वही मैं सोच रहा हूं ये कैसे नहीं हुआ. फर्स्ट 3 लाइंस जो था, देखो ये 3 लाइन, देखो यही कॉपी पेस्ट हो गया है बार बार. तो हमें कितना लाइंस कॉपी पेस्ट करना है नीचे? जस्ट फिगर दैट आउट. टेक अ मॉड्यूलो विद दैट, यू विल गेट कॉपी पेस्टिंग लॉजिक विथ यू. बी दैट इन राइट साइड, बी दैट डाउन साइड. डाउन साइड पे करना है आई पे करना है, राइट साइड पे करना है जे पे करना है. मॉड्यूलो बहुत ही पावरफुल चीज है, अभी यूज करना और सीखेंगे, है ना? सो क्विक 2 मिनट्स ब्रेक. तब तक मैं जल्दी से समझा देता हूँ वापस से वो कैसे आया. 4n+5. अरे दादा देखो, अपने को 6 डायमंड बनाने का है ना? तो डायमंड बन कैसे रहा है? पहला एक 3 लेंथ है यहाँ पर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस. उसके ऊपर तुमने अगर ये 4 लेंथ, ये जो 4 लेंथ का है, क्रॉस 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 क्रॉस, ये अगर यहां पर एंड होने वाले किसी पे तुमने लगाया तो एक डायमंड आता है, राइट? हमें n चाहिए, तो 4 लेंथ हमने n बार कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना? तो एक और आ गया, फिर एक और आया, तो ऐसे 4 वाले हमने लास्ट तक यहां पर पेस्ट करा n टाइम्स. तो 4 इंटू n. सामने में 3 लेंथ था, पीछे फिर हमें 2 लाइन ऐसे और प्रिंट करना है, तो यहाँ 2 लेंथ है, 2 कॉलम्स है, सो 2. समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अभी करेंगे ना. अरे तुम रुको, अभी सीख रहे हैं अभी हम लोग, अभी तो स्टार्ट हुआ है. देखते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम इज लेफ्ट. 4:40. क्लियर? 4n+5. लिटिल क्लास 12 बट 10 तक भी चल जाता है. यू कैन लर्न दोज थिंग्स, स्पेसिफिक थिंग्स. बट आई थिंक कॉम्बिनेटरिक्स ऑफ क्लास 11th जो होता है एनसीईआरटी में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दैट हेल्प्स अ लॉट. So I would say 12. But even if you haven't done that, you can learn it specifically those topics. ठीक है. 4 क्यों? अरे हमें कितने कॉलम्स चाहिए? कॉलम्स काउंट कर रहे हैं हम. 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम. तो एक में 4 कॉलम आया. कॉलम्स देखो, कौन से कंट्री में हो? मैं हूं इंडिया में, बैंगलोर. करते हैं. Next classes will be from Zoom, on Zoom only. Okay. This is the last class on YouTube. Next classes will be on Zoom. कुछ खतरनाक दिखा दो ICPC लेवल. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. I'll let you know. I'll let you know the class schedules soon. I'll have like
since both me and Abhishek sir are taking classes, so I'll decide and tell you कि कौन क्या topic clear and stuff. ठीक है. Most probably Thursday I can try one more class, but majorly it will be on Saturday, Sunday. This time we'll have first mentor session also. Mentor sessions might be on YouTube, but we'll see. Language expertise, 100 question. Problem solving expertise, good 300 problems, or 600 700 random problems. डाउट फोरम में तुम क्वेश्चन डालो तो पहले. तुम लोग पूछते हो डाउट में पूछ रहे डालो तो. फोरम तो पूरे खाली दिख रहे हैं मुझे. तुम लोग कोई पूछ ही नहीं रहे हो डाउट्स. यू आर नॉट यूजिंग द एजेड का डाउट फोरम टू इट्स फुल पोटेंशियल. भाई तुम लोग कितने डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो फट फट, राइट? एंड डजंट टेक मच ऑफ टाइम टू एक्चुअली आस्क इट. ठीक है, बट इट शुड बी आफ्टर योर फुल एफर्ट इन जनरल, कि मैंने ट्राई कर लिया अब फिर भी नहीं हुआ, देन आई एम पुटिंग दैट क्वेश्चन. भैया क्वेश्चंस इंक्रीज करते नहीं यार. कुछ लोग फिर आके बोलेंगे मैं कवर नहीं कर पाऊंगा. आई कैन इंक्रीज, बट आई हैव taught many batches, guys. I have taught 16, so you might be seeing me now, but I've been teaching like 16 17 batches as of now. 19 actually. ठीक है. So मतलब DSA CPU, मतलब full end to end prep of AZ basically. So I've been teaching for a long time. ये टेक्निक्स बाहर नहीं आनी चाहिए. यस. नहीं, मेरे स्टूडेंट्स जनरली बताते नहीं है लोगों को कि ये सब टेक्निक्स किसी को बताते नहीं. नहीं यार, बता दो भाई. लोग इसीलिए समटाइम्स आई बिलीव कुछ कंटेंट पे व्यूज नहीं आते कि लोग शेयर ही नहीं करते, बोलते बताऊंगा नहीं किसी को मैं ये. हाँ, we'll start solving CF question after a certain time. Starting में basics है, then we'll move to CF. No, don't worry. अरे भाई करवाऊंगा. A lot of other things, but yes, अभी तो I'm like full time in AZ. Pass out year 21. I'm technically a dual degree student, so should have graduated in 20, but dual degree था तो 21. I was like final year में I was fully free. So I was teaching folks. It is more of a like personal training kind of things. I used to teach in US for this competition called ISACO. ठीक है. हाँ भाई, अब क्लासेस, अब यूनिवर्सिटी के ऊपर पूछोगे तो फिर तुम अब भाई टाइम आउट ही हो गया और कुछ नहीं हो सकता. नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है. नहीं. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स सी. I'll give you one problem. You all try to solve this problem. Let's see if you can do it or not. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ मेरे को. Then we will understand कि तुम लोग कर पा रहे हो. ठीक है. चलो. Let's take that. Question clear? Do you need any explanation in this? Those who are in 201, I've already taught them this. This is pretty much traditional question of 201. Yes. नहीं, बस Z तक ही है. A to Z ही है. It's fixed. कैसे करेंगे ये? ठीक है. विवेक, अभी तक तो we were dealing with crosses and stuff. How did we move to ABCD? So
whenever you are dealing with such patterns now, please abstract out the values and the pattern separately. If we can somehow print this thing, look, one more, this. Maybe somehow we can deal with this, right? अगर ये print कर दिए तो maybe we can deal with this. Yes or no? Yeah. नहीं, that is not correct. Rucho. If we deal with this, if we can build this, क्या हम इसको build कर लेंगे? थोड़ा possibility है, some possibility. Yes or no? Yeah. Right. So let's try to focus on building this pattern first. इसमें repeating unit कितनी दूर का है बताओ? What is the monomer? Monomer मतलब जिसको बार बार copy paste करेंगे. कितने लेंथ का मोनोमर है बताओ? टेल मी करेक्टली इन वन गो. इसको कैसे बनाओगे? क्या रिपीटिंग है? कितना साइज का मोनोमर है? सोच के ध्यान से बताओ मेरे को. आई विल गिव यू 1 minute ऑफ टाइम. सारे आंसर्स चैट वैट पे देख पे एक बार सोच के कन्वर्ज कर जाओ कि इस इतने लेंथ को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो दिस पैटर्न विल बी क्रिएटेड. 5 into 8? ये 5 कहां से आ गया? अच्छा, कैनवस का साइज कितना है? सॉरी, आई शुड हैव स्टार्टेड विद कैनवस साइज. इट्स 5 क्रॉस 26, नो? फिक्स्ड ही तो है. If I copy paste first 8 length, ध्यान से देखो कैसे विवेक. If I just build the first 8 part of it, है ना, and then copy paste it, तो बन जाएगा. अरे हाँ या ना बताओ फटाफट. 3n plus 2 ये सब कहां से आ रहा है? साइज तो 526, 5 and 26 है ना. So this is nothing but what we have to copy paste. So we will now forget about things that will automatically get generated by copy pasting. ये इसको figure out करते हैं. How can you build this pattern first? ये कैसे pattern build करेंगे? This is 5 and this is 8 size. ये pattern कैसे build करेंगे? क्या use करेंगे? Lines. इसका कैनवस नहीं चाहिए हमें तो 26. वी नो राइट, वी हैव टू प्रिंट 26 ओनली, तो वी डोंट नीड द कैनवस, राइट. इसका बताओ. दिस लाइन very very simple. I equal to j. We have deciphered it multiple times. Tell me this line. n कहां है भाई? 5 and 8 sizes are fixed. Where are you getting n from? n तो है ही नहीं क्वेश्चन में. Where are you guys getting n from? मुझे तो n दिख ही नहीं रहा है कहीं क्वेश्चन में. n कहां से ला रहे हो तुम लोग? I plus j equal to 4. No. ग्रेटर देन इक्वल टू 4. अरे वो तो रीजन के लिए होता है, ये तो लाइन है. लेट्स सी कितना होगा. 4 भी हो सकता है, पता नहीं मुझे. मैंने बोल तो दिया. ये पॉइंट क्या है? ओवर हियर 0 1 2 3 4. ओवर हियर 0 1 2 3 4. दिस लाइन इज I plus j equal to constant. 4 comma 4 should satisfy this.
So 4 plus 4 equal to c. C is equal to 8. So I plus j is equal to 8 is the equation of this line. पॉइंट्स सही से बैठाओ. डोंट मेक सिली मिस्टेक इन फाइंडिंग आउट द इक्वेशन. ओके, सिली मिस्टेक पॉसिबिलिटी है, बट डोंट मेक दैट मिस्टेक. राइट? सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस रियल क्विक. इसको हटाओ इधर से. छोटे छोटे कोड्स है, तुम खुद से लिख लोगे. सो दिस इज अप टू 5 कॉलम्स एंड 26. ठीक है, बट वी आर ओनली बिल्डिंग द फर्स्ट वाला थिंग, दैट if I is equal to j or I plus j is equal to 8, in that case just print a cross or print a space. So even this is following in the first line, but did the first 8 columns get printed correctly? Yes or no? First 8 columns सही से आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो जल्दी जल्दी, तभी तो करेंगे हम आगे. बस इफ यू फिगर्ड दिस आउट देन यू आर डन विद द प्रॉब्लम. क्या करना है नेक्स्ट? कुछ नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू रिपीट इट 8 विद 8. तो रिपीट 8 करना मतलब j में mod 8 लगा देना. कंडीशन में j में mod 8 लगा देना. Put this over here and boom, you suddenly have आ रहा है. mod is god. Nice. समझ में आ रहा है कि नहीं? आई नीड +1 फ्रॉम एवरीवन हु इज ऑन द स्ट्रीम राइट नाउ. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, गुड. तो 8 का रिपीट करने का, सो पुट अ mod 8 at j, so it will repeat on the column side. And then it's not x, it's a b c d, but we need to print like depending on the column it's on. How do you figure out कि भाई इधर a होना चाहिए, b होना चाहिए, c होना चाहिए, d होना चाहिए? It's depending on this कि यहाँ पर c होना चाहिए. Why? Because this is 2, this is 1, this is 0. 0 पे a, 1 पे b, 2 पे c. Right? So depending on the ASCII, depending on the position over here, we have to determine how much more it's from A. So 0 पे A, 1 पे B, 2 पे C. So simply J पे capital A plus J. Okay? And if you run this, it will give you wrong answer because it will just give you numbers. These are the ASCII values. You have to typecast it to character. Okay? And this should be it. समझ में आ रहा है कुछ कुछ कैसे बना रहे हैं ये सब कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स? आई मीन इजी पैटर्न्स तो बन ही जाएंगे, वो तो तुम लोग किसी भी तरह से बना लो, फॉर लूप चला के ऐसे करके वैसे करके. बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स लाइक दिस, दैट्स व्हेन यू नीड द पावर ऑफ मॉड. राइट? इसमें काउंटिंग करने गए तो खत्म ही हो जाएगा जिंदगी. यस. How did you get accurate in one go? Because I've taught this before. That's another reason. But then like at this point in time, this is all super easy for me, right? वही होता है ना, जैसे in chess also you think about like somebody being rated X, तो it is easily assumed कि वो अपने से 400 नीचे वाले rating को easily defeat कर देगा. Very similarly in problems also, like somebody is rated X, for them X minus 400 should be super easy. तो मेरे लिए these are all super easy things, but for you it's not easy. ठीक है, this is easily 1200, 1300, 1400 problems, 1200 level problems. ठीक है, कि ये सोचे कैसे इस चीज को, राइट? खेलते भाई, चेस खेलते, खेलेंगे कभी. विल प्ले चेस
ऑन स्ट्रीम, चिल स्ट्रीम में खेलेंगे, ठीक है? 3D वो तुम लोग वो सब कोई रील देख के आए हो क्या 3D वाला? वो ऐसे मैंने वो सब इक्वेशन क्रैक करके फिर फाइनली रन, वो जो क्या नाम है उस बंदे का, भूल गया मैं। सिखाएंगे वो, अभी एक्सपेक्टो पेट्रोनम सिखाएंगे। फ्रेमवर्क्स का पावर बहुत डेंजरस है। इफ यू अंडरस्टैंड दीज, सो एंड मोस्ट ऑफ यू विल नॉट फाइंड दीज थिंग्स, क्योंकि मैं तो ये मेरे को लगता है कि ऐसे सोचने का तरीका मैं ही बना के सिखाता हूँ। ये तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से कहीं पर इन ब्लॉग्स एंड स्टफ, ठीक है? क्योंकि मैं बनाता हूँ सिखाने के लिए। मे बी समडे आई विल राइट बुक। ओके, और भी ऐसे आइडियाज हैं। हाँ, जोमाटेक में, हाँ, जोमाटेक हैड मेड दिस रील ना कि कैलकुलेटिंग, फाइनली आई हैव क्रैक्ड इट, एंड देन डोनट, ASCII आर्ट ऑफ डोनट, ठीक है? So this is there. I mean, you can do tons of things. Like you can do it 10 and then like repeat it with mod 5, and you can just copy paste it नीचे नीचे if you want. I'm just showing it now कि यार इसको like ऐसे copy paste करना है तो नीचे copy paste हो जाएगा, right? You can make it 20 and then it will copy paste 4 times. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं नहीं यार, इतना भी नहीं करता हूँ मैं। So I used to compete long back, no? मतलब has been 3 years है। So तुमने कभी देखा है क्या कि जैसे लाइक रियल मैड्रिड हो गया, किसी भी क्लब का या कोई फेमस कोई लाइक बास्केटबॉल का जो कोच है, वो कभी खुद मैदान में लाइक प्रैक्टिस कर सकता है, बट कभी compete करते हुए देखा है क्या उनको? Yes or no? So once you get into coach mode, you don't get too much time to practice yourself, and then ठीक है, मतलब you realize कि now there are other things to take care of, right? ये सब बनाएगा कौन अगर मैं बैठ के खुद इम्प्रूव करने बैठ जाऊं तो, है ना? ये सब बनाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हैवी मिड, नो, चेस में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। आई यूज्ड टू प्ले इन चाइल्डहुड, फिर आई लेफ्ट चेस। ओके, और क्या बनाए? आई थिंक लाइक बाय दिस टाइम इट्स 10 o'clock, so I now know that things will start vanishing from your brain whatever I teach. So maybe I'll show you some magic more here. If you want, you can like build many more things. Like if you want, like चलो हम लोग कुछ random चीजें try करते हैं। I equal to 0, I is less than 10, I plus 10 cross 10 का canvas, right? I'll just show you some more things like just as a canvas wala thing. So how do we build something interesting? Okay, let me show you something super interesting. What will this print? Any guesses? चलो, Max, what will this print? Guess करना है कुछ? Yes or no? चलो रन करके देख ही लेते हैं। विवेक क्या आ रहा है इसमें, देखते हैं। कुछ तो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। 5,5 पे सेंटर करते हुए 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 ऐसे 5 5 5 5 5, राइट? है ना? So it's like squares of increasing values of things, as if you think about it, right? Okay, so this is the equation for it. Okay, max of this. If I make this plus,
then you suddenly get more things. 1 0 1 1 1 1 ऐसे फिर 2 2 2 2 2 2 ऐसे like rhombus type का 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 something like this 5 5 5 5 things like this. Abs is absolute value, like negative है तो positive कर दो. Okay, abs means negative है तो positive कर दो और कुछ नहीं. Okay, abs is absolute value. मैथ्स में होता है ना एक मॉड्यूलो करके ऐसे करके लाइन दो तरफ, दैट्स द सेम थिंग. इट जस्ट मेक्स नेगेटिव. -5 is abs of -5 is 5. So this is how you can also try to build things like diamond and stuff if you have to figure it out. I mean, if this is less than equal to 4, see out else see out space maybe. Let's run this. Maybe it would print something cool in between. No more lines and stuff. Just one line equation, and then suddenly you have diamond and stuff printed. Right? What more we can do? Abs of this plus. Why are these working? These are coming from maths actually. Okay? You don't need to learn all these things. मतलब ऐसे बहुत सारे ही हो सकते हैं technically. But if you have heard about this term called locus, ठीक है? जैसे this is a shape. इसका equation क्या होता है? Mod of x plus mod of y. Mod of x means absolute value of x plus absolute value of y is equal to constant. Okay, this is how it looks like. Max of mod of x mod of y equal to constant. इसका equation, इसका diagram ऐसा होता है. Okay, this is C. इसका equation diagram ऐसा होता है. That's what we are actually using to some degree. Okay, so you can use these shapes and locuses of maths to build things that you want. So now essentially what has happened is you have an empty canvas in front of you, and if you know equation of something, you can just put it on the canvas anywhere, and then you can print, build complicated shapes, complicated patterns. Obviously patterns isn't like one super important class of problems that comes directly, but I feel it helps you build logic and pattern, like logic, fairly quickly. Okay, so this is something that eventually will like become important. Okay. ठीक है, ऐसा हो गया. So try with more things. Try and practice more questions. ठीक है, there will be a practice question. I'll add one more question today. So like I'll give you one home task. ठीक है. Like let me see if you guys can do this. So over here, if you go to ICPSC camp, if you go to AZ101, ठीक है, इस पे there is this art of pattern printing. Okay, इस पे there are more problems, like more than what is there in the like camp, because day wise में limit है, तो I have added only 5 problems. The home task for today will be to solve this 5th problem, and I'll delete this because I don't want you to cheat. तुम्हें ये पैटर्न बनाना है कुछ तो भी. Essentially यहाँ पर ऐसा देखो क्या है, 3x4, so it's like ऐसे छोटे छोटे विंडोज है, राइट, बीच में विंडोज है. सो इधर देखो 4 विंडो है, एंड इधर 3 कॉलम्स है विंडोज के, एंड ईच विंडो इनसाइड इट इज 3x3, जिसमें लाइंस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्रैवर्स कर रहा है कुछ कुछ, राइट. सो एसेंशियली वी वर नॉट लर्निंग like looping and stuff. उससे ज्यादा important था geometry, right? We were actually using coordinate geometries to some degree. स्पिनिंग डोनट के लिए यार you need to animate it, no? मतलब like you need to clear screen and build it again, right? So that is there. I don't know if this will work. क्या स्पिनिंग डोनट बनाना है? Have to see. It will not run.
It needs an interactive terminal. It will keep running forever, no? It will never get the output flushed off. You have to run it on a terminal. बन रहा है कुछ डोनट वोनट? जो भी तुम बोल रहे थे. This is called ASCII art. This is called, like, this is a very famous case called spinning donut. Okay. I'll send you the link of the code. Okay. So आज का home task क्या है? Go back, try to solve this problem, and possibly as many problems as you can from this list. ठीक है? This is the home task for today, which was not there by default in the day 5, जो भी day 6, sorry. So this is the home task for today. If you can solve this, then I will understand ki, I mean, it's not easy, but then I'll understand that you have understood everything. ठीक है? करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ऑलरेडी आज बहुत टेक्निक सीखा है, सो आई डोंट वांट टू लाइक ओवर प्रेशराइज यू ऑल इन द ब्रेन, ऐसे कि जितना सारा चीज डाल दिया एक साथ. आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट? Because I have done each of these concepts 3-4 times, that's why I remember all these things. Maths class, most probably Abhishek will take that. So last, then I think you guys were completing till not getting TLE, right? Essentially about time complexity and figuring out what will be the time complexity of code. So next class, mein maths Abhishek will discuss. Okay? I'll keep teaching you guys more and more techniques like this. कुछ मैजिक करना सिखाता रहूंगा मैं तुम लोग को. ठीक है? Every class I'll design something which will be super interesting. नेक्स्ट क्लास में क्या एक्सपेक्ट करें? कुछ चीजें सस्पेंस में रहने देते. अब हर दिन मैं बोलूंगा मैजिक सिखाऊंगा तो ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ा के आ जाओगे. ऐसे नहीं, नॉर्मल सोच के आओ, फिर देखो कि और शिट कुछ नया सीख लिया मैंने आज. ठीक है? ठीक है, कूल. Chalo then. Is geometry a part of CAP? No, geometry is not asked. This is essentially logic building. Like वो calculations करना, simple canvas size निकालना, like loops calculate करना, equations निकालना. These are things that you will even require. Not exactly this. जब तक तुम लोग ना यार, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता देता हूँ, ठीक है? जब तक तुम लोग ये सोचोगे कि मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लूं, तब तक तुम अच्छा मतलब टॉप के कोडर नहीं बन पाओगे. मतलब लाइक पहुंच जाओगे, मतलब मे बी यू कैन मेमोराइज 400-500 प्रॉब्लम एंड यू कैन क्रैक सम इंटरव्यू हियर एंड देयर. बट कुछ लोग होते हैं ना कि जो हर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं. हाउ आर दे थिंकिंग? इट्स मोर अबाउट दीज ब्लूप्रिंट्स, दीज फ्रेमवर्क्स, कि यार तुमको प्रॉब्लम में ना यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली टू थिंक व्हेन यू गेट इट. जो तुम जब वो क्रैक कर लेते हो ना, देन यू आर एबल टू सॉल्व इन एनी प्रॉब्लम थ्रोन एट यू. तो वो चीज हमें सीखना है. एंड इट्स नॉट अबाउट कि यार हमने आज एक पैटर्न बनाना सीखा. इट्स मोर अबाउट कि यार हमने सोचना सीखा कि कैनवस में हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन से हम चीजें बिल्ड कर सकते हैं. एंड बिलीव मी व्हेन आई से दैट यू माइट सी सम प्रॉब्लम समवेयर which might not be about pattern printing, but you realize कि यार उसके जो वैल्यूज है वो कोई पैटर्न में मूव कर रहे हैं, and then you know the equation issue A to build the pattern, and you can check things उस पे, and then you might be able to build this. क्या इतना हार्ड क्या देखा तुमने? इजी सा तो था. कौन सा हार्ड देखा तुमने? ये वाला, ये हो जाएगा तुमसे. दिस इज, मैं बता रहा हूँ, आधे लोग जो क्लास में वो लोग सॉल्व कर लेंगे ये जाके आज. ये हार्ड नहीं है. और वो डोनट तो पॉसिबल ही नहीं है. वो तो मैं ऐसे ही मैंने खुद कॉपी पेस्ट करा. ठीक है? When will you get the t-shirts? So there are challenges going on. ठीक है? सबका नहीं था उसमें, like randomly मैं pick करूंगा आज रात को. So there are 2 challenges going on. One on Telegram, one on this. ठीक है? जो लोग participate करोगे over time, मतलब there is a budget. तो हर week I'll distribute goodies to you all. ठीक है? Both. एक तो camp में तो कर ही रहा हूँ, एक Telegram पे. Like if you are like जैसे मैं lead code weekly I take discussion classes every week, right? So the target is to simply upsolve सारे problems सीख करके. If you are doing that consistently, I'll keep distributing goodies every week to new students.
yes, you can ask doubts from any topic in forum, as long as like the problems on platform gets a little lesser time to be solved. But एक certain level of difficulty के नीचे like 2000 rated से नीचे ही है तो हो जाएगा doubt solve. अगर उससे ज्यादा है तो यार like it's difficult even for anybody TA या कोई जो टीम देख रही है, even for them to solve. So it takes time, a lot time, more than a day. But उससे कम में तो बहुत जल्दी हो जाएगा comparatively. You can ask questions on any topic. What challenge? Telegram link. एक काम करता हूँ मैं, Telegram link quickly. I should have done it at the start of the start of the like stream only. But then I don't know how do you guys not know about it. बहुत लोग हैं उस Telegram channel में, सब कोई आते हैं weekly, सब तो नहीं आते but करते लोग अच्छे से. People do like properly question up solving and stuff. There are students who I have got to know. अभी मैं कल ही meet किया, like first time from a student, because he was super consistent in all my lead code classes. So I was like meeting with him, discussing कि क्या कर रहा है. He's from Jadavpur, so he was like चंद्रचूर करके. So he has been helping me ऐसे voluntarily about building solutions codes of lead code weekly. So I just called him कि चलो रात को 1 बजे कि free हो के आ जाओ, चलो meet पे discuss करते कुछ ऐसे, just क्या चल रहा है बताओ. So just discussing that. Chalo, I'll quickly post this Telegram wala link also. How did you do back then? Back then I had a lot of time. मैं college में पढ़ाई इतना नहीं करता था. बहुत कम चीजें करता था actually, to be fairly honest. My highest priority was doing DSA and CP. Okay. Yes, the class is over for today. Okay. So मजा आया सीख करके? Rate out of 5. मजा आया जो सीखा हमने? लास्ट में बस देखो जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखाई, दैट वाज जस्ट टू शो कि और भी चीजें हैं, विल लर्न मोर, बट इवेंचुअली एक सर्टेन लेवल तक. इंट मैक्स. सुपर गुड. चलो यार, आई थिंक देन माय वर्क इज डन. नाउ इट्स योर वर्क टू प्रैक्टिस. ठीक है? ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी एंड ऑल. देखो कुछ हार्ड तो है, देखो कभी भी कुछ भी स्टार्ट करो, you'll find it hard, you'll have to put in the effort and you'll have to solve the problems, but कर लोगे तो फिर easy हो जाएगा. That's how it is. Okay, cool. Then chalo, this will be it for today. Thanks for joining in everyone. We'll meet again in the next class. तब तक के लिए आपने बताया भी नहीं भैया, कौन सा चीज क्या नहीं बताया मैंने, कैसे सीखा मैंने? मैं तो बहुत रैंडम चीजें सीखा था. तब तो YouTube वीडियोस नहीं होते थे सीपी के बारे में. सो आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम स्पॉज, फ्रॉम ब्लॉग्स, फ्रॉम टॉप कोडर, फ्रॉम सब जगह प्रैक्टिस किया मैंने. जिंदगी के 3 साल दिए भाई मैंने इस चीज को, तब जाके ऐसा लेवल दिख रहा है तुमको, जो भी दिख रहा है कोड पे, ऐसे फट कोड लिख रहा हूँ, ये सब है ना, तब बना है ऐसा लेवल. इतनी आसान नहीं है, बट तुम लोग इतना नहीं लगेगा, मतलब तुम लोग को कम टाइम में मैं करा दूंगा. इतना टाइम नहीं लगता है बनने में. इट वॉज जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैड मच ऑफ हेल्प, मच ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टफ. कोई समझाने वाला नहीं था उस टाइम पे कि यार ऐसे सोचो, क्योंकि रटवाने वाले तो बहुत ही है दुनिया में कि ये लो भाई इसका सोल्यूशन ये. भाई वो जान के मैं क्या करूंगा? मुझे नया सोचना सिखाओ भाई. हाउ डू आई थिंक अबाउट न्यू प्रॉब्लम्स? मैथ्स कैसे इंप्रूव करूं? ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है. ये सीखना ही हार्ड चीज है. क्वेश्चन का आंसर रटना इजी चीज है कंपैरेटिवली. फ्रेमवर्क बिल्ड करना माइंड में टू थिंक अबाउट ए न्यू प्रॉब्लम इज द हार्डर पार्ट, जिसको लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोट इन कोड बोलते हैं, है ना. कूल. A2J sheet is fairly good. A2J sheet site पे ऐड कर दे क्या? A2J sheet is a good sheet if you want to follow. I followed it back when I was doing it. But diff to D E ladder मैंने solve किया था काफी हद तक, मुझे याद है. Okay, maybe we'll add it to the site. By the way, next class में I'll update you all. वो code forces वाला like leader board भी आ जाएगा तुम लोग के लिए, so you guys can register and next contest से हम लोग अब track करना start करेंगे. That first contest हो गया. Now this is the place where you are starting now. अब यहां से हमें अगले 8-10 वीक में ऊपर जाना है. एटलीस्ट 200 रेटिंग तो बढ़ाना ही है. 200 रेटिंग आई फील इज अ फेयरली गुड टारगेट, कि 2 मंथ में 200 रेटिंग बढ़ जाए. दैट्स अ फेयरली गुड टारगेट. बट हम ऑब्वियसली टारगेट हमारा लाइक स्पेशलिस्ट पहुंचने का है, बट एटलीस्ट 200 तो पहले बढ़े फॉर श्योर, है ना. सो विल हैव दैट ट्रैकिंग शीट. ज्यादा शीट बीट के पीछे मत भागो यार. पर मैंने बस शीट का जो नाम बोला, दैट इज कॉल्ड A2OJ करके एक शीट है, बहुत पुराना शीट है. आई विल एड इट ऑन द साइट. ठीक है, ओवर टाइम. बट शीट अभी कुछ मत करो यार.
देखो मैं फिर से वही समझा रहा हूँ, जब रिसोर्सेज होती है ना हमारे पास कि यार अभी कैंप में क्वेश्चंस है, तो लगता है यार ये तो है, एक और कुछ नया रिसोर्स पता चल रहा है जिससे मेरा कुछ भला हो जाए इंस्टेंटली। दैट इज हाउ माइंड वर्क्स, ठीक है। यार मुझे कोई और कुछ ट्रिक बता दे, कुछ सीक्रेट बता दे, कुछ एक ऐसा कोई शीट मिल जाए जिसको बस सॉल्व करूँ और मैं गॉड बन जाऊँ। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। शीट्स फीट्स कुछ नहीं होता है भाई, क्वेश्चंस करने हमें, ठीक है। इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, शीट्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैंने तो कोई शीट फॉलो नहीं किया, फिर भी मैं अच्छा बन ही गया। आई डोंट थिंक एनीबडी हु इज गुड हैज फॉलोड एनी शीट फॉर से। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर सम पार्ट इन मिडिल, समवेयर, बट किसी ने कोई ऐसे ऐसे नहीं है कि किसी ने कोई 400 शीट क्वेश्चन का शीट सॉल्व किया और वो गॉड बन गया। कभी हुआ ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये चीज। बट इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंस शीट्स दैट यू कैन यूज, बट करना तो करना पड़ेगा अच्छे से। जब कहीं से भी तुम लाइक प्रॉपर अपने हर टॉपिक का फ्रेमवर्क बना लो, दैट शुड बी गुड इनफ। यस, करेंगे ना भाई, अभी CA50 करेंगे अपन। Go to good college, build aptitude by grinding by yourself. Yes, if you can, even if you're not in good college, I think this time, like at this time, it's possible. बायसेस आती है बहुत सारी, लाइक जॉब्स वगैरह के लिए इधर उधर, बट आई थिंक इफ यू आर सुपर गुड तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मतलब वो सुपर गुड बनने से तुम ही रोक रहे हो तुमको खुद को टेक्निकली, ठीक है। बिकॉज हम लोग कॉलेजेस में ऐसा एनवायरनमेंट बना नहीं पाते खुद से कि यार आप फोकस कर पाओ चीज़ों पे। फ्रेंड सर्कल वैसे रखना पड़ता है कि यार सब कोई ग्रो करने के लिए बैठा हुआ है, राइट। हाँ मतलब तुम अगर ऑलरेडी 1400 हो तो 1600 पहुंच सकते हो, बट बेस्ट केस से जाने तो 1600 पहुंच सकते हैं, बट सब नहीं पहुंच पाएंगे 1600 विद इन लाइक। अभी मैं 1000 रेटिंग हूँ, मैं 2 महीने में अगर लोग 1600 पहुंच लगते तो आज के टाइम पे हर कोई CF पे 1600 होता। आई डोंट वांट टू गिव यू गाइज ऐसे फालतू की चीजें बोल के कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके फिर वैसे नहीं करना है ना मुझे। 1600 बनना 2 महीने में बहुत हार्ड है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस चीज की। बट अच्छे से करोगे तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोलूंगा पॉसिबल नहीं है। 1400 से 1600 पहुंचना इज फेयरली पॉसिबल इन 2 मंथ्स, ठीक है। यार कॉलेज स्टूडेंट में तो बहुत स्ट्रगल है यार, मैं सच बता रहा हूँ। आज के टाइम पे इफ यू आर इन कॉलेज, इट्स सुपर हार्ड, टू मैनेज एवरीथिंग। आई एम इन टच विद सो मेनी स्टूडेंट्स एज एड में। मैं सबसे ही बातें करता था यार, बहुत ही बायस है, प्रोजेक्ट बनाओ, कॉलेज के फालतू के सबमिशन सबमिट करो, ये सब वो सब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, हार्ड चीज है यार। प्लस जिनका डिपार्टमेंट सपोज CS वगैरह नहीं, तो फालतू के सब्जेक्ट्स भी पढ़ो बैठ के जो काम तो आने वाले है नहीं, ठीक है। मतलब अगर कोर में नहीं जा रहे हो तो ऐसा नहीं, अगर टेक में जाना है तो फिर कोई काम तो आने वाले है नहीं। देयर इज लाइक फेयरली गुड चैलेंजेस इन कॉलेज आज के टाइम पे, पर ठीक है, करना तो पड़ेगा जो भी है। सबने अपने अपने टाइम पे करा है, ठीक है। हाउ पीपल रीच स्ट्रेट लीनियर, कहाँ है भाई, कहाँ है तुम्हें स्ट्रेट लीनियर ग्रोथ, कहाँ दिख रहा है कोड फोर्सेस? वो तो एक फेज होता है। सो वो तो मैंने बता रखा है ना अपने वीडियो में, देयर इज अ हिल्स एंड प्लेटू, कि ऐसे हिल रहेगा फिर प्लेटू रहेगा, फिर हिल रहेगा प्लेटू रहेगा। दैट इज हाउ ग्राफ वर्क्स, दैट इज हाउ इट वर्क्स। कोड फोर्सेस स्लैश प्रोफाइल स्लैश AC रेडर, मेरा कहाँ कहाँ तुम्हें दिख रहा है? देखो तो जरा, मैं तो बताता हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये तो है भी नहीं इसमें, देखो ये भी एक हिल, फिर प्लेटू प्लेटू प्लेटू, फिर ऐसे करके धीरे धीरे। और कौन सा प्रोफाइल होगा पुराना? मेरा कौन सा प्रोफाइल है? विव गुप्ता वाला, जो मैंने तुम लोग को दिखाया होगा शायद कभी, एकदम पहले मैंने बनाया था जब, तो एकदम नीचे से स्टार्ट किया था, हिल्स प्लेटू हिल्स प्लेटू हिल्स प्लेटू, फिर मैंने AC रीडर पे शिफ्ट कर दिया था बिकॉज आई वांटेड सिंगल हैंडल अक्रॉस एवरी साइट। एक बार लेवल बढ़ जाता तो तुम कुछ भी कर सकते हो, एक अकाउंट बनाओ, 50 अकाउंट बनाओ, सब में सेम रेटिंग आ जाएगा वापस। यस, इसलिए मैं पूछ रहा कॉलेज का, मैं अभी वेकेशन में हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। लोग अच्छा अच्छा भी कर रहे हैं। देयर इज अ स्टूडेंट जो DTU में था, ही वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इन हिज फर्स्ट ईयर ओनली। फर्स्ट ईयर समर्स में बहुत ग्राइंड करा था, फिर सेकंड ईयर में भी करा, तो उसका उसका लाइक टावर रिसर्च में लग गया था। एंड दैट्स लाइक इवन फ्रॉम DTU दैट्स अ फेयरली हार्डर थिंग टू अचीव, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से अगर तुम स्टार्ट कर दो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। विवेक गुप्ता करके देख लेना। हाँ 1 ईयर में पहुंच सकते हो इफ यू आर
being fully focused on CP, then yes, you can reach in 1 year. यार ये सब मत पूछो यार, ये सब जाने को 1400 भी जा सकता है, 1200 भी जा सकता है, बट प्लस 200 तो बेयर मिनिमम है. 1200 क्रॉस कर जाएगा फॉर श्योर. 12 स्पेशलिस्ट हमें बनने की टारगेट करनी है एसेंशियली, बट प्यूपिल तो बेयर मिनिमम बनना ही है. दैट शुड बी लाइक, इतना तो करना ही है फॉर श्योर. Is fully focusing on CP good? If you're in your first year, second year also, it's good. It's good. If you're in your third year, then I think no. I started in my first year and it worked for me. But if somebody's in their college and 2-3 महीने के लिए full focus करना is good. But क्या मैं पूरा साल सिर्फ CP कर सकता हूँ? I don't think so. हाँ तो अभी कर सकते हो. 4th ईयर, सेकेंड ईयर के समर्स को यूज कर रहे हो तो देन यू कैन डू. ओएस, यस यार, तुम लोग कितने लोगों ने ओएस नहीं देखा है अभी तक? ओएस का सिंपल है भाई, इधर सीपी अच्छा या फिर चीटिंग करो, और कोई तरीका नहीं है क्रैक करने का ओएस. अभी आप वर्किंग हो? एज ऑब्वियसली मैं वर्किंग हूँ. आई एम लाइक 21 ग्रेजुएट, सो आई एम वर्किंग इन एल्कोजेनिक ओनली फुल टाइम. So I was earlier in Google, फिर I was in a startup called 0xPPL, then I am over here अभी के लिए. So अभी तो like बहुत ही चीजें बना रहे. There's something going to come soon. मैं बता भी रखा है ऐसे चैनल पे. Arena वगैरह, chess.com types for battle. शादी ढूंढना पड़ेगा भाई, लोग ढूंढने पड़ेंगे उसके लिए. पहले पार्टनर चाहिए उसके लिए अच्छा. पहले टिक ही नहीं रहा भाई, ज्यादा दिन तक कुछ चल ही नहीं रहा. क्या कर सकते हैं बताओ. What is OA? Online assessment. DSA is asked, but hard form of DSA is asked, which generally people see in competitive programming. I'll make a full video on OAs, ठीक है? Online assessments and coding test. कि what is asked, how to prepare for them and things like this. शुभम पाटिल is partner. शुभम को बुलाओ क्या यार? बस भारी है वो, यही है. बुला सकता हूँ मैं चाहता हूँ शुभम को अभी के अभी स्ट्रीम में. नेक्स्ट स्ट्रीम में बुलाऊंगा शुभम को. भैया अभी कितनी गर्लफ्रेंड? देखो यार, वो मेरा लाइक फिक्स नहीं रहता यार, वो बढ़ते कमते रहता है, तो कोई फायदा नहीं उस चीज को पूछने का अभी यहाँ पर. ठीक है, फिर कभी बताऊंगा, जूम में बताऊंगा यार. ये यूट्यूब पे नहीं जा सकता ये चीज, ठीक है? ये चीज यूट्यूब पे नहीं जा सकता अभी, नहीं. जूम पे ठीक है, जब अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे तो डिस्कस करेंगे अपन ये भी कभी क्लास के बाद. I like math, specifically on combinatorics and calculation part. What are the areas of CS that I find interesting? Theoretical computation, theoretical computer science is super interesting. Proving and stuff that you will enjoy. I at least, जैसे there is something called as approximation algorithms. ये सब चीजें interesting topics है which you will love if you love doing CP. Newer fields are also fairly interesting. Parallel algorithms, all these things are super interesting, at least according to me. चलेगा यार, पायरेट वायरेट का कोई फायदा नहीं है. पायरेट, सो माय पर्सनल फिलोसफी इज पीपल मार्क माय वर्ड्स, ठीक है? My content on piracy has only built more people joining my courses. This is, I can like keep it on record over here. ठीक है, जिसने पायरेट किया उसने उसको यूज करा नहीं, उसको लगा कि मेरे को मिल गया बट मैंने करा नहीं, तो उसका फायदा नहीं हुआ. जिसने देखा उसको लगा अच्छा है, वो ज्वाइन किया है. मुझे आके बताया उसने कि विवेक मैंने आपका डाउनलोड करके देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया. सो इट हैज डन मोर गुड टू मी देन बैड एक्चुअली. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से आज के टाइम पे. इफ you're super good, it doesn't really hurt you. हाँ, डाउट्स देखो यार, जैसे पीपल थिंक कि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि विवेक प्रीमियम पायरेट करना है, ये करना है. क्या करोगे भाई, वन ऑन वन इंटरेक्शन ही तो मेन है. तुम मेरे को आके मैसेज करते हो विवेक मीट करना है, हम लोग मीट पे जंप करते डिस्कस करते कि अभी प्लान क्या करना है. ये सब चीजें तो मेन है. कंटेंट सिर्फ वीडियो सेशन से कुछ नहीं होने वाला. क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे नहीं, तुम्हारा वो ग्रोथ होगा नहीं. दैट डजंट हेल्प. तो मुझे नहीं लगता कि टेक के वर्ल्ड में पायरेसी से, जिसमें सिर्फ वीडियो ही नहीं है, अगर कोई एक सेल्फ पेस्ड रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें piracy might do some damage. For me it has always been working in my favor. हाँ, मैंने खुद डाउनलोड करा, मैंने खुद कभी आज तक खत्म नहीं किया. I'll be very honest with you guys.
ठीक है, टेलीग्राम से मैंने भी डाउनलोड किया, ऐसे एक कोर्स नहीं कंप्लीट करा मैंने। तो कौन, अगर मैं नहीं कर पाया तो तुम लोग क्या ही, कोई और क्या ही कर लेगा, मुझे खुद पता है। जबकि मैं आई कंसिडर माई सेल्फ अ लिटिल लाइक अबव एवरेज इन विल पावर, इन द सेंस कि मैं एक चीज ज्यादा तक कर सकता हूँ। जब मैं ही नहीं खत्म कर पाया तो तुम लोग कैसे ही खत्म कर लोगे? मोमेंटम नहीं बिल्ड होता है ना वो खुद से, प्लस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, दैट्स द हार्डेस्ट थिंग। तो मुझे उस चीज का कोई मतलब, somebody was saying कि विवेक ऐसे खराब लगता है, मुझे कुछ, मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ। हाँ, approach OAs with a sample OA, yes, we'll do it. There is already some videos on my stream. Last year we had streams around like discussing OAs of like top 5 companies in general. तो वो सारे चीजें हैं। ठीक है, वो चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख लेना एक बार, उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि OAs एक्चुअली कैसे होते हैं। बड़ा हल्के नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को बेइज्जती करने के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ यार, मैं बस पढ़ाने के लिए पढ़ाता हूँ। आई एंजॉय टीचिंग, दैट्स इट, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ एक सर्टेन पार्ट ऑफ माय डे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यार लाइक और थोड़ा सी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, ये सब मत पूछो भाई, ये सब क्वेश्चंस रोनाल्डो मेसी, मतलब मुझे है, आई हैव एन इंक्लिनेशन, बट आई डोंट वांट टू लाइक ऐसे डिस्कस टू मच ऑन फुटबॉल एंड स्टफ। नहीं तो फिर ठीक है, इफ आई डू पिक आई विल पिक मेसी मोस्ट प्रोबब्ली, बट ठीक है, मतलब ये सब ऐसे इंक्लिनेशन वाले प्रॉब्लम क्वेश्चन मतलब, फिर कुछ देर बाद चैट पे आएगा विवेक बीजेपी या कांग्रेस, ये सब आएगा, फिर ये सब चीजें नहीं करनी है भाई मेरे को। When message you on Slack regarding schedule, yes, will I'll reply back on the Slack messages by today. ठीक है, is personal mentorship available from you anywhere in course or platform? So is it premium is one course which you guys can get, मतलब उस पे जैसे like you can get on one-on-ones with me, इस टाइप का चीजें रहता है। फिर क्लासेस तो होती है, वो पूरा मतलब वो पूरा end to end like OA and placement prep टाइप का है, that is fully covering everything, core CS development, ये क्या बोलते हैं, तो सब मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं DSA CP वाला पार्ट कवर करता हूँ। ठीक है, दैट इज फेयरली गुड, मतलब माय हाईएस्ट रिकमेंडेशन इन जनरल। विवेक गुप्ता इज माइनी सर्च पार्ट ऑफ सिलेबस, माइनी सर्च एनीवेज लाइक उसका जो वीडियो है दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, सो आई माइट नॉट टीच इट लाइव बिकॉज आई नीड टू कवर अदर थिंग्स, टाइम कम है, but I'll recommend it in 5th or 6th week, sorting and searching में I'll focus on sorting, searching वाला I'll leave to the video। क्या HFT में मैथ्स रिलेटेड काम होता है? यस, बहुत ज्यादा। हाँ, यस, विल लर्न। बैंगलोर में मीटअप कर सकते हैं यार, मीटअप कर सकते हैं बैंगलोर में, मीटअप रख के क्या वैसे करना है क्या, हर किया जैसा स्वामी राणा को बुला ले, कर रहे हैं क्या? बुला सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बात करता हूँ मैं। नहीं, ये तो मुश्किल सर पर प्रीमियम मैच में। यस, नेक्स्ट बैच मोस्ट प्रोबब्ली, मतलब हम लोग उतना ज्यादा बैच स्टार्ट करते नहीं है, सो नेक्स्ट बैच विल मोस्ट प्रोबब्ली स्टार्ट इन जून, आइदर दिस ईयर एंड तक प्रेप कंप्लीट हो जाएगा उनका। बट जिनका अगस्त में है उनको अब मेरे ख्याल से यही बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि 15 से OS नेटवर्क्स इनकी क्लासेस स्टार्ट होगी, जून में हैकाथॉन होगा बिकॉज वी हैव टू बिल्ड गुड प्रोजेक्ट्स, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। फिर जुलाई में इंटरव्यू बूट कैंप, जिसमें मतलब फेमस जो प्रॉब्लम्स है वो रटना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, प्लस थोड़ा OAs वगैरह प्रैक्टिस करते हैं वगैरह। तो दैट्स द प्लान अभी करंट वाले बूट कैंप में, प्लस क्लासेस तो चल ही रही है। एक अभी वहाँ पर उसमें कितना दूर हुआ है, उसमें अभी लाइक इस नेक्स्ट वीक मेरा उसमें फिर ग्राफ स्टार्ट होगा, तो मुझे ग्राफ्स पढ़ाना है उसमें, सो ग्राफ्स विल बी देयर, देन DP विल बी देयर, तो ये दोनों टॉपिक बचे हुए अभी प्रीमियम में उस बैच में। फिर उसके बाद तो स्ट्रिंग्स एंड वो सब चीजें है ही। हाउस बैंगलोर वाटर, यार मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट सुना तो हूँ मैं कि सच में प्रॉब्लम है, कि आप 12 घंटे ही सिर्फ दिन में लाइक ये रह रहा है पानी किसी किसी अपार्टमेंट्स में, सो आई डोंट नो, lecture should be given problem solving 3 hours at least, I would say। how to handle brain fog, कुछ नहीं भाई, चाय पियो। I don't know any other way to remove brain fog, maybe there is something called as like focused and diffused learnings,
ठीक है. When you're too focused on something, maybe you don't see things, so maybe move to the next problem and suddenly things hit. क्या रे उसमें ये कर सकते थे, फिर वापस जाके देखते हैं. So things like this works. Okay. Yeah. So premium maybe like there is like 2 to 3 classes every week, and camp में भी so every day. Generally I'm busy at like this 8:30 पे मैं classes लेता हूँ, बाकी पूरे दिन मेरे पास दूसरा काम के लिए रहता है. How to deal with demotivation that we are not able to solve problem in contest? कैसे नहीं हो रहा है भाई, तुम लीड कोड डिस्कशंस में आया करो भाई, सब क्वेश्चंस बनने चाहिए, सीखना पड़ेगा यार. इस पर डिप्रेशन लेने का कुछ नहीं है यार, इसमें हमें इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए कि क्या क्यों मुझसे नहीं बना, क्या क्या मैं नहीं सोच पाया, राइट. दैट इज समथिंग दैट विल बी इम्पोर्टेंट. ठीक है, so, वो चीज इम्प्रूव करना है. ग्राफ पढ़ना है यार. I don't think I'll be able to arrange anything for this specifically. So first 3 करना है. क्या स्पेशलिस्ट होता है? हाँ yes. अभी first 3 करने में स्पेशलिस्ट बन जाओगे अगर तुम स्पीड में कर पा रहे हो तो. Depending on the contest obviously. कभी-कभी 4 भी करना पड़ सकता है, but अगर टॉपिक वैसा रहा तो हो जाएगा 4. Oh. Sir, I found this reach expert, cap best, what to do be in best case. Best case मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में, खुद से एफर्ट मारना पड़ेगा, जल्दी सीखना पड़ेगा, और क्वेश्चंस ज़्यादा सीएफ के पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. That is how they are. I heard from my friend who is in AZ Premium that your graph teaching is very next level. अच्छा Amisha, I know Amisha. She's in Salesforce now. अच्छा, you are also working क्या colleague हो क्या, like by any chance? डीपी somewhat hard. हाँ, डीपी तो यार टॉपिक ही वैसा है. ग्राफ में ऐसा है ना कि तुमसे हर क्वेश्चन बनेगा ये मैं गारंटी कर सकता हूँ. डीपी में ऐसा मैं नहीं कर सकता. आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्राफ का जो फ्रेमवर्क है उसमें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. डीपी के फ्रेमवर्क में यार एज केसेस में भाई कुछ मिक्स कर देते हैं वो लोग. ठीक है. इज एआई होक्स? नहीं, एआई इज रियल. We'll focus on CF. Yes, abhi CF contest only. CF, and if you're having internship and placement, then give lead code weekly. Okay. Cool. चलो फिर. I think this should be it. 10:30. We'll wrap it up for today. Next हम लोग फिर next meet पे discuss करते हैं. We'll do more and more questions. अभी तो और interesting technique सिखाऊंगा यार. ये अनवन रिक्वेस्ट मत करो मुझे, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. But like we'll most probably do like a lot of interesting ideas. ठीक है. There are beautiful techniques I'll teach you in coming classes for sure. भैया which one for programming, iPad और MacBook? भाई MacBook में करना है और क्या, एक MacBook ले लो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा. So I had this 10th 12th 14,000 था उसका दाम मेरे ख्याल से, छोटा सा लैपटॉप फॉर माय फर्स्ट ईयर, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हिच लैपटॉप टू बाय. मैंने फर्स्ट ईयर पर उसमें चलाया, एंड देन सेकंड में आई बॉट अ मैकबुक फॉर रेस्ट ऑफ माय कॉलेज लाइफ for 4 years, rest of my 4 years. Okay. DP plus graph. Winters mein yaar, it's maybe we can do like advanced camp, but it might be difficult. Sirf DP graph, I have to see. I'm not sure exactly. But yeah, I mean, each of these takes 1 month. मतलब 1 month में मैं तुमको इनमें एक्सपर्ट बना सकता हूँ. ठीक है. 1 month each to some degree. Like premium में 3 weeks पढ़ाता हूँ, but technically it needs 4 weeks. I give a gap week after each of these topics. So maybe we'll see. So इधर premium में जब help करेगा right now. हाँ, I think if you have, अगर तुम 1100 लेवल के कोडर हो ना, तो तुम्हारे लिए प्रीमियम इज लाइक गॉड लेवल मटेरियल. क्योंकि इट्स नॉट लाइक मोस्ट क्लासिकल डीएसए कोर्सेज की यार कुछ मतलब ऐसे बस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लीड कोड के पढ़वा दिए, मतलब वो तो हो ही जाता है इवेंचुअली अगर तुम बैठ के सब बहुत सारे क्वेश्चंस रट लो तो. इट्स मोर अबाउट कि यार मैं सोचूं कैसे अच्छे आइडियाज जो एग्जिस्ट करते हैं अराउंड डिफरेंट क्वेश्चन. जैसे मैंने 3000 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें मुझे जितने आइडियाज दिखे, प्लस और भी लोग हैं, नीतीश, शुभम, इन लोगों को जो आइडियाज दिखे, उसके अराउंड सारे क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म पे बनाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस टाइप का. दैट इज व्हाट इज देयर, दैट इज देयर. हाँ, डीएसए ही है, डीएसए बट एट अ लेवल ऑफ सीपी एंड to be able to crack OAs and stuff. That is what the course is eventually. हाँ, वही है ना कि there is so much of dependency. लोग बोलते हैं कि ये पढ़ा दो, भाई उसके लिए
5 वीक पीछे का डिपेंडेंसी है कि तुम्हें STL तगड़ा चाहिए, तुम्हारा लाइक बिट मैनिपुलेशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा लाइक मैथ्स अच्छा होना चाहिए, वो सब पढ़े बिना बोलते हुए डीपी पढ़ा दो। डीपी मतलब जितना मैंने पढ़ा सका था मैंने पढ़ाया था कैंप में, बट वो इस पे वर्कशॉप पे, बट वो भी हार्ड ही है। मतलब दैट इज जस्ट 1/3 ऑफ द होल डीपी कंटेंट ऑफ एजेड। तो वर्कशॉप इज लाइक फर्स्ट 7 days, उसके बाद भी और लाइक 14 days का कंटेंट है। ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह के ऊपर और डीप डाइव, क्वेश्चंस के ऊपर और डीप डाइव, फॉर्म्स के और वेरिएशंस वगैरह, ये सब चीजें हो गई। सो लाइक बहुत डिपेंडेंसी होता है टॉपिक्स में। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ, बट आई जिनको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा होगा कि बहुत डिपेंडेंसी है। चेस खेलना है नेक्स्ट मीट पे खेलेंगे चेस पक्के से। या बट देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दैट टू। 4 years स्टार्ट होने से फायदा है प्रीमियम का। हाँ मतलब कुछ नहीं करने से तो कुछ अच्छा करना ही है। विंटर ब्रेक में एडवांस कैंप देखते करते हैं फॉर श्योर। आई हैव सम स्कूल फ्रेंड्स इन IIT KGP। हाँ IIT KGP में तो सबको ही ज्वाइन करते हैं, मतलब इफ एनीबडी गेट्स अ कोर्स दे ज्वाइन इजेट, मतलब दे नो कि क्या है क्योंकि उसमें सारे जो अच्छे कंपनीज का क्रैकिंग कर रहे लोग सब इजेट से पढ़ ही रहे, तो इवेंचुअली इट बिकम्स कि सीनियर ही जूनियर को रिकमेंड करता है, भाई तू ले ले तेरा हो जाएगा इस टाइप का। सो दैट इज हाउ इट हैज ग्रोन देयर। एंड आई टेक प्राइड इन बीइंग एबल टू हेल्प अ स्टूडेंट। कभी कभी ये भी लगता है कि किसी को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, दैट ऑल्सो आई फील एट टाइम्स। मतलब उनके लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है कि क्या करूँ और क्या ऐड करूँ। प्रोजेक्ट्स जैसे मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट भी एम्फेसिस करना है, इसलिए इसे में ऐड कर दिया हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह। जून में पढ़ाना है वो भी थोड़ा बहुत कि प्रोजेक्ट एक अच्छा कुछ यूनिक प्रोजेक्ट होना चाहिए CV में, तो वो भी बिल्ड कराना है। सो हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। मतलब पीपल बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी नो थोड़ा सम टू सम डिग्री। दूसरा लैंग्वेज भी सपोर्ट कर लो। आई कोड इन पाइथन, अब स्विच करना न्यू लैंग्वेज अनकंफर्टेबल है। करते हैं, यस विल डू दैट। ठीक है। How to crack ICPC? I'll have a session on ICPC separately. Okay. चलो यार, I think this is a place we'll have to wrap up. 11 o'clock I have a meet. थोड़ा देर में कुछ खाना वाना खा लूंगा। ठीक है। अपने स्कूल से ठीक है। So we will meet in the next meet. तब तक के लिए like feel free to reach out on like Slack या फिर if you have queries तो forum तो open है। Please forum पे अच्छे questions पूछो, questions करो, सबसे पहले तो करो और पूछो। ठीक है। ठीक है। सॉरी मैं देखता हूँ ये चीज। ठीक है। I'll see. Okay, sounds good. Chalo then, this will be it for now. Thanks for joining in, guys. We'll meet again in the next meet. See you all. Bye-bye. Good night. Yeah, clean food, important. Chalo. Bye-bye.